Hello friends, today we will discuss some important questions from human growth and development. So let's start. First one, in a normal zygote, the number of chromosomes in pair is? Options are 22, 23, 24 या none of these. The answer will be B number 23. Second question. Growth is regarded as multiplication of cells as growth in height and weight. This statement is given by A. Gesell, B. Watson and Lowry, C. Hurlock, D. Frank. The answer will be D. Frank. Third number. Development refers to the changes in organism as a whole. This statement is given by A. Van Dindale, B. Hurlock, C. Frank या D. Gesell. इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? C option, Frank. Fourth number. Growth means an increase in the physical size of whole or any of its parts. This statement is given by options are A. Watson and Lowry, B. Meredith, C. Gesell या D. Hurlock. And the answer will be A. Watson and Lowry. Fifth number. Development implies qualitative change. This statement is given by options are A. Meredith, B. Van Dindale, C. Gesell या D. Hurlock. The answer will be B. Van Dindale. Sixth number. Development is not limited to growing layer. Instead, it consists of progressive series of changes towards the goal of maturity. It results in new characteristics and new abilities on the part of the individual. ये जो डेफिनेशन है ये किसके द्वारा दी गई है? A. Gesell, B. Hurlock, C. Frank, D. Watson and Lowry. And the answer will be Hurlock. Seventh question. The tendency of feeling of revolt is concerned with which of the following ages? किस एज में टेंडेंसी ऑफ फीलिंग ऑफ रिवॉल्ट जो है वो कंसर्न होती है? ए. इन्फेंसी, बी. चाइल्डहुड, सी. अर्ली एडोलेसेंस या डी. मिडिल एडोलेसेंस. एंड द आंसर विल बी अर्ली एडोलेसेंस. 8. Which factor influences the color of eye? Options are environment, B. heredity, C. hormones या D. society. And the answer will be heredity. Ninth question. According to Das, development of the child is the product of heredity and environment. ऑप्शंस आर वुडवर्थ, गैरेट, हॉलैंड या थॉर्नडाइक. इनमें से किन्होंने ये डेफिनेशन दी थी? द आंसर विल बी ए. वुडवर्थ. 10th क्वेश्चन. इन्फेंट्स चाइल्ड एक्शंस आर डैश. ऑप्शंस आर ए. इंस्टिंक्टिव, बी. प्रोटेक्टिव, सी. कॉग्निटिव एंड डी. इमोशनल. इन्फेंट्स की जो एक्शंस होती है वो किस तरह की होती हैं? ए. इंस्टिंक्टिव. 11th क्वेश्चन. नेचर एंड नर्चर रेफर्स टू ए नंबर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बी. टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर, सी. फिजिकल फीचर्स एंड टेम्परामेंट, डी. हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. तो यहाँ जो ऑप्शन है वो डी नंबर जो है that will be correct. Heredity and environment. Heredity को as a nature माना जाता है and environment is considered as nurture. 12th question. The age after 11 years is called A. childhood, B. adolescence, C. puberty and D. middle age. Here which option is correct? C. puberty. 13th question.
अकॉर्डिंग टू सेफलोकॉर्डल लॉ डेवलपमेंट टेक्स फ्रॉम, ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चन अराइज किया हुआ है. द ऑप्शंस आर हेड टू टो, हेड टू लेग, चेस्ट टू हेड या हेड टू चेस्ट. एंड द आंसर विल बी हेड टू टो. 40 number. How many milk teeth are there? Options are 10, B number 20, C 24 या D 32. Which option is correct here? B 20. 15th number. What is the unit of heredity? A chromosomes, B gene, C fertilized cell या D zygote. Which option is correct? B gene. Bye bye, and please share and subscribe my channel if you find helpful. Thank you.